બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. કેમ છો સગલા? આજે આપણે ક્રોચેટના અંદર સાઇડ બ્રોચ બનાવીએ છીએ. એના માટે આપણે 5 કલરના બ્લિસના થ્રેડ યુઝ કરવાના છે. કોટન છે. 3 આપણે પર્પલ લીધું છે, લાઇટ, મિડલ અને ડાર્ક, એમ 3 શેડનું આપણે યુઝ લીધું છે. ગ્રીન કલર છે અને વ્હાઇટ કલર છે. ફ્લાવર બનાવીએ છીએ આપણે 3 કલરના, તો લાઇટ ડાર્ક શેડ આપણે યુઝ કીધું છે. એવી રીતના આપણે બીજા કયા બી કલરના અંદર કોમ્બિનેશન લેવાનું છે, તો 3 કલરમાં લેવાનું છે. લાઇટ ડાર્કના શેડથી અને આપણે 2 કલર ગ્રીન અને વ્હાઇટ સાથે બ્રોચની પિન છે, મોતી છે. સૌથી પહેલાં આપણે પર્પલ લઈએ છીએ, ડાર્ક પર્પલ, મેજિક રિંગ, વન ચેન, टेन एससी बनावाना है. एससी मीन्स के सिंगल क्रोशियो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 एससी कम्प्लीट थया पछी मेजिक रिंगनो थ्रेड अपने खींची लेवानो. 1 जो स्मॉल चेन है ने स्कीप करीने सेकंड मांथी स्लीप स्टीच 1 અને 2 चेन. आज अपनो फर्स्ट है एना अंदर अपने डीसी करवानुं छे 3 टाइम. डीसी मीन्स के डबल क्रोशियो. कांटाना ऊपर थ्रेड टाइपना लपटीने आज अपनो फर्स्ट है एना अंदर अपने 3 टाइम डीसी करीए छे. 1 टाइम डीसी, एना ज अंदर सेकंड टाइम डीसी, एना ज अंतर थर्ड टाइम डीसी, 3 डीसी, 1 2 चेन ना नेक्स्ट ना अंदर थी अपने स्लीप स्टीच 1 2 चेन, 3 डीसी, 1 2 3 2 चेन, नेक्स्ट में अपने स्लीप 2 चेन, 3 टाइम डीसी, 1 2 3 2 चेन, स्लीप स्टीच. 5 पेटर्न फ्लावर रेडी थशे अपनु. 1 2 3 2 चेन, एना नेक्स्ट में 1 2 चेन, 1 2 3 डीसी, 2 चेन, स्लीप स्टीच. थ्रेड अपने थोड़ा सा लॉन्ग कट करिए छे. क्रोशियो ने सोई में अपने एने पूरवी लेवानुं. आगळनी साइड पर अपने थ्रेड लई आववानुं छे. मोती लईने अपने मोती अटेच करी दईशुं. साथे ज 2 नोट बांधीने पाछळ थ्रेड कट कर लेवानुं छे. अपने लाइट, मिडल अने डार्क 3 कलरना फ्लावर्स अपने रेडी करवाना छे. एटલું कम्प्लीट थया पछी ग्रीन कलर लीव्स बनावी लीए छे. हाथी ज अपने 1 नोट बनावी लेवानुं. 1 2 3 4 5 6 7 चेन. 1 स्कीप करीने फर्स्ट अंदर 1 टाइम एससी, 1 टाइम एचडीसी,
DC, one time, DC, second time, HDC one time, ઉપર અંદર વન ટાઈમ એસસી, એના જ અંદર સેકન્ડ એસસી, વન ચેન, આ બેમાંથી આપણે ચેનને કરવાનું, સ્લીપ સ્ટીચ, પછી એના અંદર વન ટાઈમ એસસી, એના સામને વન HDC, ટુ DC, વન वन HDC, वन SC, स्लीप स्टीच, वन चेन लईने थ्रेड कट कर लेवानुं। आपणे वन लीव्स बनावीशुं। ना पछी अपना व्हाइट थ्रेड लईए छे, 3 फ्लावर्स, 1 लीव्स, व्हाइट कलर नु थ्रेड लईने अपने मैजिक रिंग, वन चेन, 6 SC, फर्स्ट राउंड 6 SC, 1 2 3 4 5 6 थ्रेड खेचीने वन स्कीप करीने सेकंड अंदर 6 टाइम अपने इंक्रीज करिए छे, 12 SC कम्प्लीट थशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थर्ड राउंड 1 SC, वन टाइम इंक्रीज, मार्किंग अपने मूकी देवानुं साथे 6 टाइम करिए छे, 18 SC कम्प्लीट थशे। फोर्थ राउंड मार्किंग अपने ऊपर करी लेवानुं, 2 SC, 1 2 SC, वन टाइम इंक्रीज, 4 टाइम करीशुं, 24 SC अपना कम्प्लीट थशे, मार्किंग ऊपर मूकी देवानुं। फिफ्थ राउंड 3 SC, 1 2 3, वन टाइम इंक्रीज, 6 टाइम करीशुं, 30 SC कम्प्लीट थशे, मार्किंग ऊपर करी लेवानुं। 6 राउंड 4 SC, 1 2 3 4, वन टाइम इंक्रीज, 6 टाइम करीशुं, 36 SC कम्प्लीट थशे। 7मो राउंड 5 SC, 1 2 3 4 5, वन टाइम इंक्रीज, 6 टाइम करीशुं, 42 SC अपना कम्प्लीट थशे। एटलुं कम्प्लीट थई गयुं। एना पछी स्लीप स्टीच, 1 2 3 4 चेन, 1 2 स्कीप करीने थर्डना अंदर स्लीप स्टीच, 1 2 3 4, 1 2 स्कीप करीने थर्डना अंदर स्लीप स्टीच, 1 2 3 4, 1 2 स्कीप करीने थर्डना अंदर स्लीप स्टीच। एवी रीते आपणे पूरुं कम्प्लीट करी लईए छीए एंड सुधी। आटलुं कम्प्लीट थई गयुं। एंडमां अहींया स्लीप स्टीच, वन चेन लईने आपणे एसी करीए छीए, 1 जे आपणे चेन बनावी छे एना अंदर 1 2 3 4 5 6 चेन,
પછી આગળની સાઈડ પર ડાયરેક્ટ સ્લીપ સ્ટીચ 1 ચેન લઈને 1 2 3 4 5 6 6 એસી સ્લીપ સ્ટીચ 1 ચેન તો આપણે સ્કોલપ રેડી કરીએ છીએ 6 એસી 1 સ્લીપ સ્ટીચ 3 4 5 6 નેક્સ્ટના અંદર સ્લીપ સ્ટીચ 1 ચેન ને 6 એસી આપણે પૂરું સ્કોલપ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ થોડુંસું આપણે થ્રેડ લોંગ કટ કરીશું આપણું પૂરું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું એના પછી આપણે ક્રોશોની સોયમાં થ્રેડ પૂરવી લેવાનું બેક સાઈડ પર આપણે પાછળની સાઈડ પર ક્રોશોની પિન જે છે એને અટેચ કરી લઈએ છીએ સ્ટીચ કરી લેવાનું બરાબરથી રીતે આપણે સેકન્ડ સાઈડ બી સ્ટીચ કરી લઈએ છીએ થ્રેડ પછી આપણે કટ કરી લેવાનું સ્ટીચ થયા પછી બ્રોચની પિન આપણે અટેચ કરી લીધી એના પછી ફ્લાવર જે આપણે રેડી કર્યા છે 3 ફ્લાવર લાઇટ ડાર્ક અને મિડલ આપણે આવી રીતના સેટ કરી લેવાનું આના ઉપર અને ગ્રીન લીવ્સ આ બધાને આપણે ગ્લુની મદદથી ચિપકાવી લઈએ છીએ સેટ કરીને સર્કલના ઉપર બ્યુટીફુલ સાઈડ બ્રોચ બનીને આપણું રેડી છે आप सगळ्यांना हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए ना समझ पाए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए आप सगळ्यांनो सपोर्ट मळे छे एना माटे घणुं घणुं शुक्रान आज मैं बेज लीधुं छे व्हाइट एना बदलीमां आप कॉम्बिनेशन हिसाबे गोल्डन है या तो ग्रे कयो भी शेड होय जे भी आपनो एना हिसाबे आपने यूज करी सकीए छे।